हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज के इस वीडियो में चलिए बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स लॉ के यूनिट नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर्स के बारे में। ये 6th सेम का ऑनर्स का क्वेश्चन पेपर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है व्हाट इज बेसिक कस्टम्स ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी इज अ टाइप ऑफ टैक्स imposed under the Customs Act 1962. Full stop. The basic customs duty charged different from the items to items, and the central government of India has the right to exempt or reduce any item from being taxed the basic custom duty. दूसरा देखिए, what is customs duty exemption. So customs duty exemption means that the central government of India has the right to not allow any custom duty to be charged on a particular item under the Customs Act 1962. This can be done for goods which are of strategic or secret nature or is intended to be used for charitable purposes. उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डू यू मीन बाय कस्टम्स एक्ट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुड्स आर इम्पोर्टेड इन और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया थ्रू सी, एयर और लैंड। फर्स्ट, गुड्स में इवन कम थ्रू पोस्ट पार्सल्स और एज बैगेज व्हेन पैसेंजर्स ट्रेवल इन एंड आउट ऑफ द कंट्री। फर्स्ट, द कस्टम्स एक्ट वाज फॉर्मुलेटेड इन द ईयर 1962 to prevent the illegal import and export of goods. First, moreover, all imported goods are subject to the duty to affording protections to the indigenous industries as well as to keep the imports or to a minimum in the interest of Indian companies and to secure the exchange rate of the Indian currency. उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप्स ऑफ कस्टम एक्ट। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कस्टम एक्ट एंड कस्टम ड्यूटी आर नंबर 1 or the other. The following purposes are the reasons why custom duty is levied on the import and export of goods in India. सबसे पहले देखिए नंबर 1, to restrict the imports for conserving foreign exchange. दूसरा देखिए to protect the imports and exports of goods for achieving the policy objectives of the government. Number 3, to regulate export. Number 4, to coordinating legal provisions with other laws dealing with the foreign exchange as such the Foreign Trade Act and the Foreign Exchange Regulation Act. Number 5 देखिए to safeguard domestic trade. Number 6, to protect the revenue of resources. Number 6, to protect the industries in India from the unfair competition. Number 8, to prevent the smuggling of goods and activities related to the same. उसके बाद देखिए to prevent the dumping of goods. उसके बाद the basic types of duties of customs collected are as follows. Number 1, basic custom duty. Number B, surcharge. Number C, additional duty of customs, special additional duties. And number E देखिए other levies like countervailing duty, anti-dumping duty, safeguard duty and so on. Also cess duty is leviable of certain goods. उसके बाद देखिए स्टेट द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कस्टम एक्ट 1962। लास्ट ईयर यहाँ पे देख सकते हो आ चुका है, ये 10वां का क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हो रूल्स अंडर द कस्टम एक्ट। द सेक्शन 156 ऑफ द कस्टम्स एक्ट ऑफ 1962 स्टेट्स दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन एम्पावर्ड टू मेक regulations that are consistent with the provisions of the act and to carry out the main purposes of the act. Multiple rules have been framed under these powers. The principal rules of the act have been mentioned below. Number 1, the customs valuation rules of 1988 for the valuation of import goods for calculating duty payable. दूसरा देखिए द कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज ड्रॉबैक रूल्स ऑफ 1995 द मोड ऑफ कैलकुलेटिंग द रूल्स ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक्स और एक्सपोर्ट्स। तीसरा देखिए द एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। चौथा देखिए बैगेज रूल्स ऑफ 1998 दिस स्टेटेड द रूल्स एंड अलाउंस फॉर ब्रिंगिंग इन बैगेज फ्रॉम अब्रॉड बाय इंडियन एंड टूरिस्ट हु विजिटेड द कंट्री। First of duty-free baggage allowance carried by international passengers when coming to India is INR 550,000 per individual. Before the 31st of March 2016, the amount was INR 45,000. With effective from the 1st of April 2016, all international passengers travelling to India need not file declarations if not carrying dutiable goods as part of the baggage they bring along with them. Custom rules of 1966 this states that 1996 this states that import of goods at a concessional rate of duty for manufacturing of excisable goods. First, it also provides the to procure to be followed when goods are imported into India for export duties. Regulations under the Customs Act. Under Section 157 of Customs Act of 1962, the board has the authority to make rules that are consistent with the provisions of the Act to carry out the purposes of the Act. First, various regulations have been framed under this power such as the one stated below. सबसे पहले देखिए प्रोजेक्ट इंपोर्ट रेगुलेशन ऑफ 1986 प्रोसीड्यूर्स फॉर प्रोजेक्ट इंपोर्ट्स। उसके बाद कस्टम्स हाउस एजेंट्स लाइसेंसिंग रेगुलेशंस ऑफ 1984 अदर स्पेसिफाइज नोटिफिकेशंस अंडर द कस्टम्स एक्ट वेरियस सेक्शंस। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो आपको मिलते हैं अगले वीडियो में एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे मेंशन द प्रिंसिपल्स दैट गवर्न द लेवी ऑफ कस्टम ड्यूटी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।